Hello, friends. Welcome all of you to the YouTube channel of Illuminating Group 360. This YouTube channel designed to provide free education to students. And in this order, we have launched a new course for students who are preparing for the various competitive examinations and for the entrance examinations of various universities like law entrance examinations, graduation entrance examinations, along with the post graduation entrance examination. So in this content, we have started this particular content in the two ways. In the first way, we will provide the lectures which are related with the theories, and in the second way we will provide the question sessions. And in that sequence, we have started a question series, and already we have completed three parts of that series. This is the fourth part of question series, fourth part. And in every part we have completed around average 15 questions. So in this part we will cover from question 60 to 80. Basically, the main motive behind covering this all questions and behind launching this course is to provide informative and education related videos to all the students who are preparing for the competitive examination. As we all know that in this current situations, there are not so much resources that we can by using that resources we can prepare for the examinations. So by our YouTube channel Illuminating Group 360, our main motive is to provide the education education related information in that sequence, that students can enjoy the videos and they can also with the help of that video may succeed in their examinations. So first of all, we are welcoming you all in our YouTube channel, and now we are going to begin with the session. So in this session we will cover around uh, 20 questions from question number 61 to question number 81. So now, what is question number 61? Question number 61. The president rule in a state can be continued at a stretch for a maximum period of. President rule in a state can be continued at a stretch for a maximum period of. Answer will be 4 years, 2 years, 3 years और 1 year. आंसर बताइए आप लोग. बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी पिछले साल के ही 3-4 एग्जामिनेशंस में देखने को मिला है. सो द आंसर विल बी 1 year. क्वेश्चन नंबर 62. The Council of State in India has how many elected members? The Council of State in India has how many elected members? राज्य सभा की बात कर रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 238. देखिए, बेसिकली कंटेंट्स में या फिर हम लोग कह सकते हैं डेटा या फिर फैक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज डेटा फैक्ट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं. लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका आंसर 238 ही था. और अगर आपको ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हों अभी के अगले साल के भी तब भी 238 ही होगा. क्वेश्चन नंबर 63. द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय. The executive power in India is actually exercised by. The executive power in India is actually exercised by. Answer will be Council of Ministers. Question number 64. 42nd Amendment Act was adopted by the Parliament in. 42nd Amendment Act was adopted by the Parliament in. It is 1976. आप लोग ये भी बताइएगा कि 42nd Amendment Act किससे रिलेटेड है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये 101% चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है, खासकर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज़ के. क्वेश्चन नंबर 65. द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया इज. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया इज 65 अ प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं. Public Undertaking Committee is a.
Public Undertaking Committee is a cabinet committee, parliamentary committee, committee of a political party, none of these. Public Undertaking Committee is a cabinet committee, committee of a political party, parliamentary committee, none of these. Answer will be parliamentary committee. Next, question number 67. What is the maximum gap permissible between two sessions of the parliament? What is the maximum gap permissible between the two sessions of the parliament? So answer will be 6 months. 6 मंथ का अधिकतम गैप संविधान 6 मंथ का अधिकतम गैप जो संसद होती है उसके दो सत्रों के बीच में हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 68. The governor of a state is a constitutional head, real head, hereditary head, nominated head. The governor of a state is a. So answer will be constitutional head. The governor of a state is a constitutional head. Now question number 69. Very important question. Who elect the vice president of India? भारत में जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसे कौन इलेक्ट करता है? हाउस ऑफ पीपल, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. सो आंसर विल बी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट के दो हाउसेज क्या हैं? तो इसका आंसर हमारे सामने हो जाएगा सर लोकसभा एंड राज्यसभा. साथ ही साथ अगर हमसे पूछा जाए जो संसद होती है पार्लियामेंट वो तीन चीज़ों से कंसिस्ट होती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 70. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट फॉर. यदि किसी कारण विवादवश तरीके से डेथ हो जाती है राष्ट्रपति की या फिर राष्ट्रपति इनकैपेसिट या कैपेसिटी राष्ट्रपति की नहीं होती है प्रेसिडेंट रहने के लिए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है कितने समय के लिए? सो आंसर विल बी व्हाट? सो इट इज 5 months. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 71. ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू पंचायत सिस्टम, इंटर स्टेट काउंसिल, लोकपाल, रीजनलिज्म. So answer will be panchayat system. Grassroot democracy is related to the panchayat system. Question number 72. The Parliament of India consists of. अभी मैंने इसका आंसर आप लोगों को बताया है. The Parliament of India consists of. So आंसर क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट. या फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट वाइस. The Parliament of India consists of प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट 73. क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय. Option number A, elected member of both houses of parliament, member of both houses of parliament, elected member of both houses of parliament and state legislative assemblies, elected members of both houses of parliament and both houses of state legislatures. So answer will be elected members of both houses of parliament and both houses of the state legislatures. Question number 74. A vote taken unexpectedly without voters having been briefed in advance is snap poll, by-election, opinion poll, exit poll. So answer will be option number A, snap poll. Question number 75. The President of India can dash the house, sign die, prorogue, adjourn, none of these. So answer will be what? Prorogue. क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिसेस मीन्स व्हाट? द इंटरवल बिटवीन द प्रोग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली, द पार्लियामेंट इन सेशन, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस. सो आंसर विल बी द इंटरवल बिटवीन द प्रोग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली.
the interval between the prorogation of parliament and its reassembly. Now, question number 77. The speaker used the casting vote to maintain a state quo, to challenge the opposition, to defeat the government in the absence of the prime minister. So what will be the answer? To maintain status quo. To maintain status quo. Question number 78. Third last question. Council of State in India can delay a money bill for Council of State in India can delay a money bill for 78 14 days. Question number 78 का आंसर 14 days हो जाएगा. ठीक है. Question number 79. Starred questions requires starred question requires oral answer, unwritten answer, supplementary question, none of these. So answer will be oral answer. Now question number 80, the last question. Consolidated fund is votable, non-votable, non-plan, none of these. So answer will be answer will be B, non-votable. Consolidated fund is non-votable. So this is the 20 questions which are covered in part 4. Okay, so hope you enjoyed this video. If you enjoyed this informative video, do like, share and comment this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel. This is Illuminating Group 360. Have a good day.